So we are going to begin the important questions of DBMS. Okay, so important questions. Now, without further ado, we're gonna do these questions. So the first question that we face here is explain the following. That is normalization. So does any one of you know what is normalization? Normalization. What is normalization? Does anyone have any idea? No? Okay. No, right? Okay. So normalization basically refers to the process of reducing or removing Data. no, not data, anomalies and data redundancy. So these are heavy words, isn't it? Yeah. So data. So anomalies, okay. Anomalies are further divided into many types. So I'll just write it here. Anomalies such as, you need to write this, okay, such as insertion anomaly, deletion anomaly, and updation anomaly. So anomaly, English word है, it means something out of ordinary. कुछ मतलब गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना, something out of ordinary. That means anomaly. Something out of ordinary. And redundancy का मतलब क्या होता है? Does anyone have any idea? क्या बोला? Redundancy. Any idea? No. Ashish? जहाँ पे हम चेंजेस नहीं करते. No. Redundancy means, useless duplication. This is an English word, redundancy. Like you are printing a paper. Now Alok is, trying to print that paper by drawing. Now it is useless. Yeah, you will print 1,000 and he will just print 1. Yeah. It is redundant. It is useless. That is what useless duplication is known as redundancy. So normalization एक process है where we try to minimize or where we try to reduce or remove anomalies such as insertion anomaly, deletion anomaly, and updation anomaly, and reduce data redundancy. So what is an anomaly? And what is normalization? Yeah. So as you just learned, normalization is a process of reducing or removing data redundancy and anomalies. Now there is a process, okay, step-by-step process, and we will learn few steps. Okay, and the first step is first normal form. First normal form is the first step of normalization. Okay, so in the first normal form, there is a condition your relation should fulfill, your database should fulfill. That is, the attributes should be atomic. Yes. Did we learn about acid properties? Atomicity way. Yeah. Did we learn about acid properties? No, right? No. So let me just go through acid first then. Okay, acid, as the name suggests, A means atomicity, C means consistency, and I means isolation, and D means durability. Okay. So Alok will tell me what is atomicity. Yes. Atomicity सुन के जो लग रहा है, that is true. Atomicity मतलब क्या है? Atomicity means either the transaction takes place or transaction does not take place at all. It cannot. There is no thing called partiality. Okay. उसके बाद कब मैं बताऊँ? Okay, consistency. Okay, then tell me about consistency. थोड़ा बहुत आता है. Yeah, please. Consistency मतलब Yes. same pattern में flow करना. Same pattern. Yeah.
फॉलो करना, इट मेंटेन्स सेम पैटर्न। Yeah. और आइसोलेशन मींस अकेले रहना, अकेले रहना, right? मींस आइसोलेशन। और ड्यूरेबिलिटी मींस लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, right? But durability here is a bit different actually. Here durability means once you store a data, it will be there unless and until a third party comes and tries to meddle with it, छेड़खानी कर रहा है। हाँ, जब तक try to manipulate. Yeah, try to manipulate. Unless and until third person comes and manipulates, the data will be there forever. वही, इसी को ड्यूरेबिलिटी। हाँ, that is durability. मतलब जब तक छेड़खानी नहीं करेगा तब तक सेव रहेगा, यहीं पर रहेगा। हाँ, वही, उसको मतलब कहीं पर उठा के लेके जाओ हार्ड डिस्क को, वो रहेगा कहीं वहीं। हाँ, खत्म हो गया। So बाकी सब सेम है ना। Atomicity का मतलब ये क्या था? या तो ट्रांजैक्शन होता है या तो ट्रांजैक्शन नहीं, बीच का वो नहीं होता। या तो तुम्हारा मनी ट्रांसफर होगा या तो नहीं होगा, बीच में मतलब पार्शियलिटी नहीं होगा पास इसमें लोग कि आधा भेज दिया आधा नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा। हाँ, प्रोसेसिंग मतलब नहीं रहेगा। सिंपल पास पता है ना? हाँ? सिंपल पास नहीं पता है? नहीं, एक शब्द में फिर हमने सिंपल पास होता था ओह हाई स्कूल में, तो वो नहीं होगा मतलब। या दैट्स पास होती किधर था? या ओ सिंपल पता। या जो इधर पास करते हाँ, है ना। बट हियर इट डिफरेंट atomicity is there, here it's not atomicity, it's atomic. So here atomic means value cannot be broken down. Atomic मतलब atom क्या होता है? सबसे छोटा चीज है ना, उसको हम और भी तोड़ नहीं सकते, है ना। atom को नहीं तोड़ सकते। cannot neither be created nor destroyed. So atomic मतलब attribute should be atomic, मतलब है ना, ये और ज्यादा उसको तोड़ नहीं सकते। cannot be split up. So ये है the first normal form. So first normal form we can see here. First normal form is a table is said to be in first normal form in the DBMS if it meets the criteria of atomicity, which means that each attribute in the table must have an atomic domain. It is the first stage in normalization. So wait, attributes should be atomic, मतलब atomicity को follow करना चाहिए। बस you can just write it in exam like this, I think it's more than enough. And like let's go to next, that is second normal form. So first normal form क्या होता है ना? Alok, can you please tell me again? So one example of first normal form, sorry, is that you have a table, simple table, you have it, you have this is ID and your name, not name, let me call it your whatever you call it, a name is देता हूँ, name, right? So ID is 101 and name is your Ashish, Sagar, and 102 we have is Alok, and 103 we have is Samrat. सम्राट बुरा मान रहा था इतना टाइम। So see, okay, so see here, here attribute name has like, is this in first normal form? क्या ये first normal form में है? ये क्या है कि 101 में एट्रिब्यूट्स ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, दो हो रहा दो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। Do you think so, Alok? Do you think so? So मेरे हिसाब से नहीं। क्यों नहीं? क्यों मतलब फर्स्ट वन में मतलब वो देखो तो मतलब की एट्रीब्यूट्स में दो है, मतलब एक आईडी पे दो नहीं हो सकते, मतलब पर्टिकुलर, राइट? सो यार यू आर करेक्ट, है ना। सो वो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक को हटा दो, हाँ एक को हटा देते हैं और उसको फिर से नीचे लिखते हैं 101 करके और इसमें सागर अलग से करते हैं। सो या दिस इज हाउ यू फिक्स, है ना, मतलब सेम आईडी नंबर। हाँ इट्स फाइन। नहीं, फिक्स करने का दो तरीका होता है, या तो तुम एक ही टेबल में है ना अलग से डालोगे, या तो तुम यू विल क्रिएट टू टेबल्स, एक्चुअली टू टेबल्स बनाओगे सागर के लिए अलग से 101 बोल के, अलग टेबल है ना, पूरा अलग ही टेबल। तो वो नंबर चेंज करने से भी होगा? नहीं, नंबर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये 101 ही है, मतलब सागर और आशीष दोनों 101 ही है। बट एक मतलब उसमें वैल्यू में दो नहीं हो सकता, मतलब एक एट्रीब्यूट। हाँ वो तो एटॉमिसिटी बनाने के लिए है ना, इसको हमने एटॉमिक बना दिया। नाउ इज इट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है ना, यस है ना। नाउ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दिस इज एन एग्जांपल। सो हियर सर का एग्जांपल भी है। सर का ये टेबल जो है ना, कलर लिखा हुआ है, कलर ब्लैक और रेड है, ये ब्लैक और रेड है, तो ये एटॉमिक, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, एटॉमिक नहीं है, मतलब इसको तोड़ भी सकते हैं ना, तोड़वाना नहीं होना चाहिए मतलब। अब हमने इसको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया हमने, अलग कर दिया, अब दो टेबल बना दिया हमने, तो नाउ इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसमें है ना सबका सिंगल वैल्यू है, एटॉमिक है। दैट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नाउ वी गोइंग टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या चीज होना चाहिए? फर्स्ट तो है ना, इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म,
it should be in first normal form. And second criteria क्या होता है? There should not be any partial dependency. थोड़ा भयानक वर्ड आता है. So there should be no partial dependency is the second normal form. ये वाला डिफिकल्ट है ना? थोड़ा सा difficult है. So I will not go in depth, right? So first normal form क्या था? So what is partial dependency? In order to understand that, we have few examples here. So here we have a table. You guys don't want to see the table? So here we have a table, okay? Example, this is a table. So here you can see that course, we have a student ID, we have a course ID, we have a course fee. Student ID is a primary key, that is, it is a candidate key, you can say, and course ID is also a candidate key. These two are candidate keys, and course ID is dependent on, sorry, course fee is dependent on course ID actually. अगर 1 होगा तो 500, then if it's 2 it's 1000, if it's 4 it's 200, Depend है ना? It depends on course ID. So this is a partial dependency. It is depending partially on the primary key. So that is the main thing. So in order to remove that, what we'll do, we'll split the table again, and we'll split the course fee with course ID, and we'll course ID with student ID, different tables. So another table that sir put is here. The table has composite primary key. This means composite primary key. So both of these are primary key actually in this table, okay? So course student ID and store ID, both of them are primary key. So but what is happening is that location is partially only dependent on store ID. Store ID, yeah. Location is only dependent on store ID, which makes it a partial dependency. Dependent on. Yeah. So partial का meaning, English meaning क्या है? What is partial? Partiality. Partial का मतलब क्या होता है? Partially means व्यवहार कर. किसी को like parody देना. नहीं. Partiality का meaning होता है बस आधा. I will give you partial amount of this food. मैं आधा food तुम्हें देता हूँ. Partial, है ना? इसका मतलब partial का मतलब थोड़ा सा, मतलब कमती, आधा. Okay. So partial dependency. Equal ना कर. Equal ना करना यार. तो partial dependency का मतलब क्या होगा फिर? Partial dependency means, so partial dependency, partial को word का मतलब होता है आधा. Partially तुम human हो, partially you are an AI. आधा तुम रोबोट हो, आधा तुम इंसान हो. So partial का मीन आधा, और आधा dependency मतलब ये आधा ही डिपेंड कर रहा है. So what does that mean is, this customer ID and store ID both are primary key. ये हमारे primary keys है. बट क्या हो रहा है कि लोकेशन है ना, सिर्फ स्टोर आईडी में डिपेंड करता है. स्टोर आईडी अगर 1 है तो लोकेशन ये है, अगर 2 है तो ये है, फिर से 1 आ गया तो फिर से यही होगा. तो इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन स्टोर आईडी. सो इफ इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन स्टोर आईडी, इट मींस इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन हाफ ऑफ द प्राइमरी की. है ना? पूरा प्राइमरी की में डिपेंड नहीं हो रहा, बस आधा में डिपेंड हो रहा है. ये तो नहीं होना चाहिए, ये टेबल में नहीं होना चाहिए. तो इफ यू वांट टू फिक्स दिस, व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट another table. What and this table, what will be there? Customer ID, Store ID and store ID. Okay, and in another table it will be store ID and location. Location, right? क्योंकि these two are, this is dependent on this, so we put it together. फिर ये तो अलग से है ना, primary key है. So that's how you fix this thing. Simple as that. तो सर ने भी मतलब क्या किया, इसको तोड़ के दो टेबल बना दिया, लोकेशन के लिए अलग से डाल दिया. So this is partial dependency का मतलब. फिर से अब can you tell me what is partial dependency? Partial dependency. Yes. Means equal ना कर. It is not depending fully. हाँ, fully. दो तुम्हारे attributes are your primary key, but तुम एक में डिपेंड हो रहे हो तो है ना, ये तो अलाउड नहीं है ना. दोनों में डिपेंड होना चाहिए primary key. वही, that's the thing. Yeah. And why are we doing this first and normal form? हम क्यों कर रहे हैं? हम क्योंकि normalization बना रहे हैं. We are creating normalization. और normalization क्यों बनाते हैं? Normalization क्यों बनाते हैं? To reduce or remove anomalies and data redundancy. ये हटाने के लिए we are doing this normalization. तुम if you keep this check, ये ठीक करते हो ना, तो भविष्य में redundancy नहीं होगा और तुम्हारा anomalies नहीं आएगा, अजीब चीजें नहीं होगा मतलब. और अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे. तो ये फाइनल वाला है. बस 3 ही है ना? यस, 3 ही है, बट एक एक्स्ट्रा वाला भी है. बॉयस बोलते हैं उसको, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं. तो लेट मी
third normal form, it is very simple actually. Most simple is third. So third normal form. So third normal form का first criteria है, it should be in first normal form and it should be in second. No, it should be second normal form. Second normal form में उससे first normal form में है ही ना. It should be in second normal form, and the second criteria is, what's the second criteria? Second criteria is there should be no transitive dependency. Okay, so it's a भारी word, I know. Dependency का मतलब डिपेंडेंसी मतलब किसी के मतलब डिपेंड नहीं करने की, डिपेंड नहीं होना है। depend करना is dependency. Okay, I am dependent on you, that is dependency. So वही मतलब partial dependency मतलब ये आधा इसमें dependent है, तो फुल्ली होगा तब तो, है ना. फुल डिपेंडेंसी मतलब फुल्ली डिपेंड है ना, बट इसमें बस में आधा है डिपेंडेंट है इस एग्जांपल में. तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है ना, इट्स लाइक दिस. तुम्हारे पास एक टेबल है, अरे टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इधर ही एग्जांपल तुम्हारे पास सर का एक टेबल है. वी हैव अ बुक आईडी, वी हैव अ जॉनर आईडी, वी हैव जॉनर टाइप एंड वी हैव प्राइस. तो थिंग इज बुक आईडी जो है ना, बुक आईडी से हमें पता चलता है कि कौन सा जॉनर का है वो, है ना. बुक देख के हमें पता चलता है कौन से जॉनर का है, और वे जॉनर आईडी से हमें पता चल रहा है कौन से जॉनर टाइप है. तो इसका मतलब बुक आईडी से तुम्हें जॉनर आईडी मिल रहा है, जॉनर आईडी से तुम्हें जॉनर का टाइप भी मिल रहा है. तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव. हमने पढ़ा था ना, A to B, B to C, then A to C. So here also है ना, ये बुक आईडी से जॉनर आईडी से जॉनर टाइप. तो ये ट्रांजिटिव है, मतलब एक से एक, फिर दूसरे, फिर तीसरा मिल रहा है, मतलब एक से दूसरा मिल रहा है, दूसरा से तीसरा मिल रहा है, दैट इज ट्रांजिटिव. सो ये नहीं होना चाहिए. ये इसको ठीक करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर से टेबल को तोड़ेंगे. वही ब्रेक द टेबल, इसको अलग से रखेंगे और इसको अलग से रखेंगे. तो अलग रखने का तरीका ऐसा है. तो वही जॉनर आईडी है, जॉनर टाइप को हमने अलग से है ना रखने के लिए जॉनर आईडी के साथ रख दिया, क्योंकि ये दोनों इसी से निकल रहे हैं ना, इससे ये निकल रहा है. फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग दिस. So two of this I will made a separate table here. This is a separate table for them. और इसको जानना आईडी तो इसमें होना ही चाहिए, इसमें है. ठीक है, सिंपल इज दैट. एनी डाउट्स गाइस? कुछ तो डाउट नहीं है ना, सिंपल है. तो वही अभी for now we'll just go through this only. No transitive dependency, you know, that's all. So transitive dependency का है ना, अगर लिखा जाए तो ऐसा होता है. If you know X is a super key of a table, Y is a prime attribute. So इसे लिखने का तरीका भी होता है. In other words, 3 and F can be explained like this. Anyway, leave it. So yeah, that's all. Now we'll go through the questions again. So what are prime attributes? What are primary attributes? prime. What are prime attributes? If you look at this is wrong definition. एक चीज wrong है इसमें, ये non prime वाला. So what are prime attributes? Prime. Okay, let me tell you that. Any attribute that is part of a candidate key Oh, part of a candidate key. is known as Prime attribute. yes, prime attribute. Okay. Part of a candidate key is known as Yeah. What is a candidate key? the two attributes. No. So let me teach you basic stuff then. Since you don't know this, right? ये थोड़ा बहुत ही basic है, मैं पढ़ा देता हूँ. So if I have a table, you know, और table में I have is ID, I have is name, और I have is again, you know, secret ID, okay. So I have ID is 101, 102, 103, and secret ID as 001, 002, 003, and name is Sagar Alok Samrat. Okay. So क्या what can be primary key here? Primary key क्या होता है? Primary क्या Uniquely identify the table, right? ID होगा तो So ID can be a primary key. और कुछ primary बन सकता है क्या primary key? secret भी बन सकता है, उसकी ID है. Can you look at this? What can other be primary key? कुछ और बन सकता है कैसे ID छोड़ के? आईडी को छोड़ के हाँ. कुछ प्राइमरी की नहीं बन सकता. नहीं बन सकता. Are you sure? बन सकता है, secret ID की है. ओ आईडी को छोड़ के हाँ, सेक्रेट आईडी प्राइमरी की होता है. बन सकता है ना. हाँ. बट बात ये है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है. हाँ. There can be a single primary. Either it will be ID key or it will be secret. So
Actually, both of them are actually candidate keys. Candidate keys. Candidate key का मीनिंग क्या होता है? मतलब एक टेबल में दो प्राइमरी की या प्राइमरी की होगा तो कैंडिडेट नहीं. Sir, first of all, tell me what is the meaning of candidate? कैंडिडेट इंसान है ना, पर्सन Student. हाउ Candidate. मेनी कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट इन चार कैंडिडेट. Candidate means, potential. Candidate means potential. Potentially ये क्या करने वाला है? That is candidate. वो नहीं है क्या पर्सन? वो ये एक्चुअली एग्जाम्पल है ना. 2 people are for candidates for the president. It means 2 लोग फाइट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, एक बनेगा मतलब. So 10 students are candidates for this officer's exam. ऑफिसर के एग्जाम के लिए 10 लोग हैं हमारे स्टूडेंट. So कैंडिडेट मतलब जो बन सकता है. So कैंडिडेट की क्या मतलब है ना, refers to those attributes which can uniquely identify the table. और ये प्राइमरी की बनने का लायक है मतलब. अंडरस्टैंड? सो ये दोनों है ना कर सकता है आइडेंटिफाई यूनिकली इस टेबल को. अब दोनों में से किसी को भी मैं चूज कर सकता हूँ प्राइमरी बन जाती, बट प्राइमरी कैन बी सिंगल वन ऑन टेबल में. इट इज हमारा विश है कि कौन से को चूज करें. आईडी को चूज करें. तो कैंडिडेट की का डेफिनेशन क्या होगा देन? अब refers to those attributes which can be occur or which can uniquely identify a table, right? So how Sir, many? हाँ अभी तक ये कैंडिडेट की है. हाँ. जब भी ये सेपरेट करेंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा. नहीं, सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है. No need to separate. We just need to choose one of them as primary key. अभी के लिए प्राइमरी की बना देंगे इसको. तो ये दोनों ही कैंडिडेट की है, बट एक प्राइमरी की है. मतलब एक को मैंने चूज कर दिया, तुम कैंडिडेट की आ जाओ, तुम्हें मैं प्राइमरी बना देता हूँ. तो इट विल रिप्रेजेंट द टेबल. बट बाकी भी रिप्रेजेंट कर सकता है अगर हम चूज करेंगे तो. दैट्स ऑल. ओके. सो ये फंडा समझ में आ गया. तो कैंडिडेट की मैंने आई सेड बिकॉज प्राइम एट्रीब्यूट्स मतलब दोज एट्रीब्यूट्स विच आर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. जो कैंडिडेट की का पार्ट है उनको प्राइम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं. तो वो सेक्रेट आईडी भी बोल दो. या दैट इज आल्सो प्राइम एट्रीब्यूट है ना. और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है. तो वो आईडी जैसा नेम. दिस इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, राइट? सो व्हाट आर सुपर कीज? Okay, the more that important of that is Super key is a set of one or more than one attributes that can uniquely identify a row in a table. तो वो आईडी और सेक्रेट आईडी को सुपर की होगा. Actually, candidate key is also a super key. हाँ. है ना? A super key can be a superset of a candidate key, which is a minimal set of attributes that can uniquely identify a row. All candidate key are super keys, but not all super keys are candidate key. Super keys are important in database design because they help ensure data integrity and prevent duplicate records. एक candidate की super key सारे candidate की super key है, but सारे super key candidate की होने का जरूरत नहीं है. It's trying to say that. And now transitive dependency. I already said what is transitive dependency. हाँ, सारे बहुत ये. Yeah. A transitive dependency is a type of functional dependency where a non-prime attribute depends on another non-prime attribute that is dependent entirely on a candidate key. So what it's trying to say is, I will just write here, a non-prime, where is it? A non-prime attribute is dependent on another non-prime attribute which is dependent on another prime attribute. तो एक ID है, ID से मिल रहा है तुम्हारा बुक आईडी. बुक आईडी है, बुक आईडी से मिल रहा है बुक का नेम, बुक नेम से मिल रहा है जानर, है ना. तो दिस इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. दैट इज द डेफिनेशन. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैन कॉज डेटा रिडंडेंसी. ये भविष्य में डेटा रिडंडेंसी बना सकता है, अनोमली लेके आ सकता है इन द डेटाबेस, इसलिए हम इसको हटा देते हैं. टू एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी द टेबल कैन बी डिकम्पोज्ड. अगर किसी भी मतलब डिपेंडेंसी को मतलब सॉरी है ना, डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हम उसको टेबल को तोड़ देते हैं, डिकम्पोज करते बोलते हैं उसको, वो कर देते हैं. बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म. दिस इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ लिया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया. एक एक्स्ट्रा आता है बॉयज नॉर्मल फॉर्म आता है, बॉयज कोड. बट ये आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड, इज इट? स्किप है ना, स्किप इट. तो डिकम्पोजिंग अ स्कीमा. सो वही डिकम्पोजिंग अ स्कीमा इन BCNF बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में कैसे करते हैं वही दिखा रहा है. सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू लॉकिंग. सो अब हम सेकंड क्वेश्चन में पहुंच गए लिटरली. ये क्वेश्चंस कहाँ गए? ये रहा. दिस इज द क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट ये नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया. नाउ वी आर इन लॉकिंग एंड इट्स टाइप्स एंड ऑल ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड. या सो लॉकिंग एंड इट्स टाइप. और लॉकिंग क्या होता है? अभी तक सेकंड में पहुंचे हैं. यस. नाउ दिस वाज द हार्डेस्ट एंड द बिगेस्ट. ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है.
तो एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। कोई नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉकिंग एंड इट्स टाइप्स। लॉकिंग होता क्या है? आज इतना ही पड़ा। लॉकिंग तक इफ यू वांट ओके, बाकी कल करें क्या? ठीक है, लेट्स डू इट टुमारो, लेट्स टॉक। मैं आई नो आई विल पुट दिस वीडियो अप ऑन द इंटरनेट, यू कैन जस्ट रिवाइज इट ऑन करके डाल दो सुन लो।